Hello children, today I am going to resume the introduction part of chapter number 2, that is polynomials, with the topic degree of polynomials. Now the topic is degree of polynomial. Okay, what do we mean by the degree of polynomial? The highest value or the highest power of variable present in the polynomial is called the degree of the polynomial. Let's see some examples. Here 3x square plus 7x plus 9 or 4x square plus 3x cube plus 7x plus 4 or 3x raised to the power 4 plus 9x square plus 7x plus 3x cube minus 4. Okay, here we see these three are polynomials because the power of variables is non-negative integral. Okay, आप सभी को बताया गया था कि polynomials क्या होते हैं. Polynomials are the algebraic expressions in which the power of the variables is a non-negative integral. जहां पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें अगर हम, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, हियर वी सी द वेरिएबल इज एक्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट्स डिग्री इज इक्वल टू 2. हियर वी सी the highest power of the variable is 3, so degree is equal to 3. And here we see the highest power of variable is 4, so the degree of this polynomial is 4. Okay, तो आप समझ गए होंगे इन तीन केसेस से कि what is called the degree of the polynomial. The highest power of the variable present in the polynomial is called the degree of the polynomial. Okay, now come to the next definition. Classification of polynomials. Okay, we can classify the polynomials on the basis of powers and on the basis of terms. Okay, on the basis of degrees and on the basis of terms. तो हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके डिग्री के बेसिस पर और उनकी टर्म्स के बेसिस पर. ओके, नंबर 1, 2, 3 and 4. On the basis of degree, especially there are 4 types of polynomials, that is linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. Okay, when the degree of the polynomial is 1, or we can say that the polynomial which is written in the form of ax plus b is called the linear polynomial. Example 2x plus 3 or 3x minus 7. Here we see the highest power of variable is only 1, so it is called the linear polynomial. Now quadratic polynomial, when the degree of the polynomial is 2, it is called the quadratic polynomial, like x square plus 2x plus 3. तो ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, जहां पर हाईएस्ट पावर क्या होती है पॉलिनोमियल की, 2 होती है. क्यूबिक पॉलिनोमियल, when the degree of the polynomial is 3, it is called the cubic polynomial, like 3x cube, here the power is 3, or another example 4x cube plus 3x square plus 7. तो ये क्या कहलाएंगे, cubic polynomial, because the degree of the polynomial is 3. Biquadratic polynomial are the polynomial in which the degree of the polynomial is 4, that is x raised to the power 4 or x raised to the power 4 plus 7x plus 1. तो ये क्या कहलाते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर डिग्री क्या होती है, 4. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज देयर आर स्पेशली 4 टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. नाउ वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑल्सो. ओके, so on the basis of terms there are 3 types of polynomials. Number 1, monomial, binomial and
trinomial. Okay. Monomials are the polynomials which are having only one term, like x, y, 2x minus 3y. These are called the monomials because they are having only single term. Binomial. Those polynomials which are having two terms are called the polynomials, like binomials 2x plus 7, like 4y minus 8. तो ये क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल्स कहलाते हैं. अब यहां पर जो होती है पावर कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की, डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन केवल होगी कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स. लाइक हम यहां पर 3x की पावर 2 प्लस 7x भी लिख सकते हैं. तो ये भी एक बाइनोमियल है, अब चाहे पावर उसकी कुछ भी हो. ओके. ट्राइनोमियल्स आर द पोलिनोमियल्स विच आर हैविंग 3 टर्म्स, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, लाइक minus 4x की पावर 8 plus 7x की पावर 7 plus 9. Here we see that there are 3 terms, so they are called the trinomials. Okay. So classification of polynomials on the basis of degrees and on the basis of terms are here in front of you. That on the basis of degrees there are 4 types of polynomials: linear polynomial, quadratic, cubic and biquadratic. Linear polynomials are having the degree 1, quadratic polynomial degree 2, cubic polynomial degree 3 and biquadratic polynomial degree 4. And on the basis of terms there are 3 types of polynomials: monomial, binomial and trinomial. Okay. अब हम देखते हैं जब हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो हम उसकी टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं. और जब हम टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो हम उसकी डिग्री को नहीं देखेंगे, डिग्री कुछ भी हो सकती है. ओके. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स. यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक विद द एग्जाम्पल्स. Now the definition is constant polynomial. What does it mean? A polynomial containing one term only consisting of a constant is called a constant polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक सिंगल टर्म होती है और वो भी क्या होती है? कांस्टेंट. और कांस्टेंट आप सभी जानते हैं जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होती है. ओके. दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लाइक 2, लाइक 3, लाइक -4, लाइक 5. दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. ओके. तो हम देखते हैं यहां पर जो अब पूछा जाए आपसे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो रिमेंबर दैट द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. The degree of the constant polynomial is always 0 because here there is no variable. Okay, so the degree will be 0. Now the next definition is of zero polynomial. A polynomial containing of one term, namely 0, is called a zero polynomial. Okay, so the polynomial containing one term that is 0 is called a zero polynomial. Degree of the polynomial. Remember that the degree of the polynomial will be not defined. Okay. In case of zero polynomial, the degree is not defined, but in case of constant polynomial, the degree will be 0. Okay. So you have to, students, you have to note down all the definitions like constant polynomials, zero polynomials, and the remaining definitions in your fair notebook. Also, you have to write down the classification of polynomials on the basis of terms and powers in your fair notebook. Thank you very much.